हाय गाइस, स्वागत है आपका ऑन येट अनदर एपिसोड ऑफ फीमेल क्रिकेट लाइव। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे कल का मैच जो हुआ था गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के मैच के बारे में और फैंटेसी पिक्स के। तुरंत रिकैप ले लेते हैं कल के मैच का। गुजरात की कप्तान बेथ मूनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद द जायंट्स लॉस्ट विकेट्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स। Beth Mooney or Laura Woolworth were the top scorers for the Gujarat Giants. Beth Mooney scored a 52 ball 74 and Laura Woolworth scored a 30 ball 43. Sophie Eccleston and Deepti Sharma were the pick of the bowlers for the UP Warriors as they claimed 3 wickets and 2 wickets respectively. Chasing a 153-run total, the UP Warriors were off to a horrendous start and they were reeling at 16 for 4. And the partnership between Dipti Sharma and Poonam Khemnar saw the UP Warriors get close to the target, but eventually वो fixture हार गए by 8 runs. दीप्ति शर्मा ने 88 runs of 60 balls बनाए और पूनम खेमनार ने रन बॉल 36 बनाया. Shabnam Shakil was the pick of the bowlers for the Gujarat Giants as she accounted for 3 big wickets. So, Julie, I'd like to take your views on how yesterday's game panned out. और एक अच्छा मुकाबला हमने देखा इन दोनों टीमों के बीच, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स। और जैसे कि आपने प्रेडिक्शंस भी लिए थे, तो यश और प्रतीक, आई थिंक दे वर राइट इन सेइंग दैट यूपी वॉरियर्स हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग दैट मैच, और वैसे ही कुछ हुआ। माफ़ कीजिएगा, गुजरात जायंट्स उन्होंने कहा था और मैंने यूपी वॉरियर्स कहा था, पर एग्जैक्टली उल्टा हुआ, वैसे ही कुछ हुआ, गुजरात जायंट्स वो मैच जीती। पर एक अच्छा मुकाबला हमें देखने मिला मेरे ख्याल से। गुजरात जायंट्स अभी भी हम कहेंगे कंटेंशन में है, हालांकि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है और बाकी टीमों के रिजल्ट के ऊपर काफ़ी डिपेंड होगा। बाकी टीम, आई मीन टू से आरसीबी का जो रिजल्ट आज के मैच के अंदर होगा, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो तीसरी टीम कौन होगी जो क्वालिफाई होगी अगले राउंड के लिए। पर उसके पहले अगर इस मैच की चर्चा हम करें तो यूपी वॉरियर्स, आई थिंक चेज अगर हम उनका देखें तो बिल्कुल भी वो चेज के अंदर आई डोंट थिंक दे हैड अ गुड डे विद द बैट। 16 रन पे 5 विकेट्स उन्होंने गवा दिए थे, एंड व्हेन यू आर चेजिंग अ स्कोर लाइक 152, तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्टार्ट होती नहीं है। पर दीप्ति शर्मा ने उनका जो पूरा एक्सपीरियंस है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जो उनके पास है, वो इस्तेमाल करा और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव 50 उन्होंने स्ट्राइक करी दीप्ति शर्मा ने यूपी वॉरियर्स के लिए, तो वो एक अच्छा प्रदर्शन रहा। मोर देन 50% ऑफ द रन्स भी उनके ही बल्ले से आए और वो पूनम खेमनार के साथ अच्छी साझेदारी उन्होंने करी, पर आखिर में 8 रनों से छूट गए। बट आई थिंक क्रेडिट टू द गुजरात जायंट्स बॉलर्स एंड स्पेशली शबनम शकील। केवल 16 साल की उम्र है उनकी, और पिछले साल आपको याद होगा जब T20 अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, तब शबनम शकील भारतीय टीम का पार्ट रही थी। तभी उन्होंने वो, मेरे ख्याल से बोर्ड वर्ल्ड कप के केवल बाद ही उनका बोर्ड एग्जाम भी था, और उसके पहले मुझे मौका मिला था फीमेल क्रिकेट के थ्रू ही उनका इंटरव्यू करने के लिए। तो फीमेल क्रिकेट के यूट्यूब चैनल पे भी आप उनका इंटरव्यू देख सकते हो और वेबसाइट पे भी उनका टेक्स्ट इंटरव्यू है। तब उन्होंने काफ़ी उनकी स्टोरी कही थी कि उनके अर्ली डेज़ कैसे थे। तो मुझे जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट करना है, क्योंकि यंगस्टर है, ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा, जो भी व्यूअर्स या शो देख रहे हैं हमारा। लेकिन तो शबनम के बारे में अगर मुझे थोड़ी बातचीत करनी है, तो 16 साल की उम्र है, जैसे कि मैंने मेंशन करा है। शी वाज वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स इन दैट अंडर-19 स्क्वाड दैट वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में साउथ अफ्रीका के अंदर, और शबनम उस स्क्वाड का हिस्सा रही थी। और शबनम के पापा हिमसेल्फ इज़ अ क्रिकेटर, वो क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं आंध्रा के अंदर। और शबनम जब छोटी थी तब उनके पापा के साथ वो जाती थी, वो मैचेस देखती थी, और शबनम के पापा भी फास्ट बॉलर ही हुआ करते थे। तो उनको उनसे, उनके पापा से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला और उनको भी लगा कि वो भी क्रिकेट खेल सकती है। और उसके बाद उन्होंने अपनी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट की। केवल 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार क्रिकेट खेला, और 15 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते वो 110 किलोमीटर्स पर आवर इस स्पीड के साथ वो गेंदबाजी करती है। और वुमेंस क्रिकेट के अंदर ये स्पीड अचीव करना बहुत बड़ी बात है। तो शबनम एक बेहतरीन क्रिकेटर है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बर्डिंग क्रिकेटर्स इंडिया के अंदर है, एंड आई एम श्योर दैट शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। बट अगेन कमिंग बैक टू द मैच, आई फील कि गुजरात जायंट्स जब बल्लेबाजी कर रहा था, अच्छा टॉस उन्होंने जीता था। पहले बल्लेबाजी जब करी तो एज यूजुअल उनके जो ओपनर्स है उन्होंने अच्छी स्टार्ट दी। लॉरा वुल्फार्ट ने 40 ऑड रन बनाए, कप्तान बेथ मूनी ने भी और एक हाफ सेंचुरी लगाई, मेरे ख्याल से उनकी भी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव हाफ सेंचुरी है इस WPL के अंदर। बट उसके बाद ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया नहीं। जो उनकी डेकोरेटेड मिडल ऑर्डर है, जिसका मैंने कल भी जिक्र करा था, फीबी लिचफील्ड है, एशले गार्डनर है, दोबारा फेल हुए। हालांकि एशले गार्डनर ने एक स्टार्ट करी थी, बट वो बड़ी इनिंग्स खेल नहीं पाई।
पर अगर वहाँ पे और भी रन आते उनसे तो ऑब्वियसली वो 160 के ऊपर 170 75 तक भी पहुँच सकते थे, पर वैसे कुछ हुआ नहीं। यूपी वॉरियर्स ने आखिर में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, बट ऑनेस्टली आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि सोफी एक्ल्स्टन को इतना लेट इंट्रोड्यूस करा कल के मैच में एलिसा हीली ने। अगर हम स्कोर कार्ड भी देखें तो शी वाज द लास्ट बॉलर टू बी इंट्रोड्यूस, तो ये अक्सर हम देखते नहीं है। एक्ल्स्टन इज एन अटैकिंग बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर है, तो यूजुअली हम देखते हैं कि उनको सेकंड या थर्ड चेंज पे के इससे वो इंट्रोड्यूस हो जाए, पर वैसे कुछ हुआ नहीं कल के मैच के अंदर। बट जब भी उनको लाया गया शी इमीडिएटली हैड एन इफेक्ट, उन्होंने 3 विकेट्स भी चटकाए। शी वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दीप्ति शर्मा, जिनके नाम भी 2 विकेट्स आए कल के मैच के अंदर। तो आई थिंक ओवरऑल एक देखने में मैच मजा आया, बट यूपी वॉरियर्स आई थिंक दे मिस्ड अ ट्रिक। कहीं तो कुछ तो खामियां कमियां रह गई। जब वो गेंदबाजी भी कर रहे थे या जब भी बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जब वो चेस कर रहे थे और आखिर में वो 8 रन काफ़ी महंगे पड़े उनको, क्योंकि अगर अभी हम पॉइंट्स टेबल भी देखें इस WPL 2024 का, तो यूपी वॉरियर्स नंबर 4 पे ज़रूर है, पर उनका जो नेट रन रेट है वो काफ़ी ख़राब है। बाकी टीमों से अगर हम देखें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिनके साथ वो compete कर रही है फिलहाल वो थर्ड पोजीशन के लिए, तो आई थिंक वो नेट रन रेट दैट विल कम टू हॉन्ट देम, एंड इवन इफ RCB go on to lose the match, I think just because of a better net run rate, RCB have a better chance of qualifying in today's match. या सो हाँ, वो उनके दीप्ति शर्मा की बॉलिंग पर वो जो बेथ मूनी का कैच छूटा, जिसके बाद सोफी एक्ल्स्टन को वो एक 20 रन मारे, आई गेस वो एक ओवर में, लास्ट ओवर जो उनका हुआ, तो काफी महंगा पड़ा वो ड्रॉप कैच कहा जा सकता है, बिकॉज अदरवाइज द होल सिनेरियो वुड बी डिफरेंट। इंस्टेड ऑफ अ 150 you would be chasing a potentially a 130 or a 140 run score. So Pratik, what are your views on yesterday's game? Well, Yazad, so yet another game that went down to the wire, and these are, consecutive games where teams are getting closer. And if you've come to observe, the chasing teams haven't got off to great starts, but all the work that has been put is by the middle order to somehow restructure the innings, steady the board, and then come close to the game. But as far as yesterday's match is concerned, there were a couple of stars who stood out in both teams, and it was quite a thrilling encounter for us to witness. So, starting off with the way Gujarat Giants went about it. Like we've been talking about, that their openers have somewhat found the consistency in the latter half of the tournament, which has held them to gone on and put some good totals out there, and which is precisely why I thought Gujarat do have an edge over the UP Warriors, and rightly the openers lived up to the expectations. Both of them, gave their team a good start and saw them through the power play phase. And I think just through that momentum, they went about posting the score, because after their contribution, there weren't many notable scores, lower down the order. And we've been talking about how captains, especially experienced captains, need to play out the innings and see out the bowler as well. And I think Beth Mooney precisely did that yesterday. Up until the half stage of the first innings, there weren't clear signs of her trying to accelerate, but it was about knocking the balls for the ones and the twos in the deep, and making sure that the scoreboard is slowly ticking over. So once again, a lot of respect for the way she's gone about scripting that total in the very first innings itself. And of course, a few disappointing dismissals coming there in the first innings. We saw about how Phoebe Litchfield, whom we've been talking a lot, and who also possesses the talent, but her dismissal yesterday to Deepthi Sharma, it was quite half-hearted. The shot, she did not give herself fully into it. Either she should have played it grounded or gone for the big one, but the intention wasn't there to send it off the park. And similar with Ashley Gardner as well. I mean, that was a short pitch delivery, which usually if she is in a good form, that would have gone on to the boundary inevitably. But again, one of those days where she just couldn't make use of the start and post a bigger total against her name.
And as far as the bowling is concerned of the UP Warriors, again, like Julie mentioned, it was very surprising to see Sophie Eccleston being introduced, at such a later stage in the innings. But nevertheless, like we've spoken, that she, that whenever she's attacked, she does get the wickets. And yesterday, something similar happened. So she was the highest wicket taker with 3 wickets, and Deepti Sharma once again stepping up for her team and picking those crucial wickets in the middle. And coming on to the UP Warriors batting, I think it's the same thing we've been discussing. Starting off with Alisa Healy's dismissal about her struggles against the faster bowlers. There wasn't great pace on offer yesterday by the youngster, but again, there was sufficient movement in the surface, which was too much for Alisa to handle up front, and she perished early. And again, Kiran Navgire, I would say that was again a half-hearted shot, because if only she had leaned into that drive and completed that shot with her head down, the story could have been completely different itself. Maybe she looked for elevation on that very shot which she played, and she did not find it. And once your openers get out, and even Chamari Atapattu went for a duck yesterday. So once these guys got out, the team's structure itself felt like it was crumbling, and a lot of balls were also eaten up. But that was when Deepti Sharma and Poonam Khemnar stepped in once again. Deepti Sharma, an innings for the ages, because she soaked in all the pressure and made sure that the boundary scoring abilities were not reduced, the runs were not dried up, and there was constant singles and doubles also in the middle, which aided them to get closer to the game. But at the end of it, it was Gujarat Giants who prevailed. And again, brilliant bowling by Shabnam, the youngster. The one thing that stood out for me about her was how she stuck to her lines and lengths. She did get a hint of swing early on, and about how she utilized it stood up to me. And I feel at the end of the day, in such high scoring encounters, it all boils down to the way your field. To the way your team goes about fielding, because in this tournament we've spoken about how disappointing fielding performances have gone on to give those extra 5 to 6 or 10 to 12 runs. And I think precisely yesterday, somewhere on this aspect, the UP Warriors went on to lose the game. I would like to ask यश आपका क्या व्यूज है कल के मैच के बारे में? गुजरात जायंट्स का जैसे कि हमने देखा कि एक बार फिर से ओपनर्स ने अच्छा शुरुआत दिया, फिर एक अराउंड 60 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप हुआ उनका, और अराउंड तभी 8 ओवर्स हो चुके थे, बट लेकिन उसके बाद वो लोग केप्ट लूजिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, और स्किपर बेथ मूनी को दूसरे एंड से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। और अगर फिगर्स को देखें तो लास्ट के अराउंड 12 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 92 रन बना पाए और 7 विकेट खोए उसने, तो उनको एक मोमेंटम नहीं मिला इनिंग्स को उसके बाद। और जो लास्ट ओवर में जो बेथ मूनी ने अटैक किया सोफी एगिस्टन को, उस वजह से उनका टोटल 150 प्लस चला गया, और अगर वो ओवर नहीं आता तो वो वापस अंडर 140 होता उनका टोटल, जो डिफेंड करने के लिए और मुश्किल हो जाता था। और फिर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोफी एगिस्टन अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो लास्ट ओवर आई थिंक वहाँ पे गेम चेंज हो गया पूरा। और गुजरात के फिर बॉलिंग में शबनम शकील को ओपन किया, फर्स्ट ओवर दिया, तो वो काफ़ी एक क्या बोलते हैं इम्प्रेसिव मूव था, क्योंकि उसके पहले हमने देखा कि कैथरीन ब्राइस या तो मेघना सिंह, वो दोनों में से कोई बॉलिंग ओपन करता था, लेकिन कल के मैच में बेथ मूनी ने शबनम शकील को एक कॉन्फिडेंस दिया कि ओपन द बॉलिंग अटैक, और उन्होंने भी जो उनके स्किल्स एग्जीक्यूट किए, और ये नहीं देखा कि बैटिंग कौन कर रहा है उनके सामने, भले वो एलिसा हिली हो या चमारी अटापटू हो, उन्होंने सिंपल रखा, उन्होंने बेसिक से शी स्टिक टू हर बेसिक्स, एंड देन एज ए रिजल्ट शी डिलीवर्ड।
और आई थिंक उनके स्पेल में उन्होंने डॉट बॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा, मोस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल्स आई थिंक उन्होंने इक्वल किया शबनम इस्माइल को, 18 या 19 डॉट बॉल्स डाले पूरे स्पेल में। तो वहीं पे पूरा एक मैच गुजरात के फेवर में आ गया। और उसके बाद फिर वो पार्टनरशिप दीप्ति शर्मा के साथ पूनम खेमनार ने जो सपोर्ट दिया एक एंड से, तो वो एक पार्टनरशिप ने टुवर्ड्स द एंड काफ़ी क्लोज लेके आए। और अगर वो पार्टनरशिप नहीं होता तो काफ़ी बड़ा डिफीट हो सकता था यूपी वॉरियर्स के लिए। बिल्कुल वो जैसा कि कहते हैं ना, शी वाज नॉट फेज्ड बाय द सिचुएशन, ऐसे इट लुक्ड वेरी नेचुरल टू हर व्हाट शी वाज बोलिंग। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर टुडेज गेम। आज का मैच जो है वो होने वाला है मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच। आरसीबी अपना पिछला मैच जो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट था वो 1 रन से हारे थे, और तो अब आज का गेम उनके लिए एक मस्ट विन गेम है। और दूसरी ओर मुंबई इंडियंस हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। अपना पिछला मैच गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट वो एक हिस्टोरिक चेज में जीते थे, और दे विल बी लुकिंग टू acquire that first spot in the points table, जिसके चलते आप डायरेक्टली फाइनल्स खेल सके। सो जूली, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप आज का मैच दोनों टीम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? दोनों टीमों के लिए अलग अलग रीजंस के लिए इम्पोर्टेंट है यजाद, जैसे कि आपने पॉइंट आउट करा है वेरी करेक्टली कि एमआई को भी जीतना है, आरसीबी को भी जीतना है, बट ऑब्वियसली द गेम ऑफ क्रिकेट कोई एक ही टीम जीत पाएगी और किसी एक ही टीम का गोल जो है वो आज अचीव हो पाएगा आफ्टर द एंड ऑफ द डेज प्ले। तो मेरे ख्याल से जैसे कि हमने डिस्कस करा है, एमआई अगर हम पॉइंट्स टेबल के अंदर भी देखें तो नंबर 2 पोजीशन पे है, दिल्ली कैपिटल्स टॉप ऑफ द टेबल है। और हमें पता है कि जो भी टीम टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करेगी डब्ल्यूपीएल के अंदर वो फाइनल खेलेगी, सीधा फाइनल खेलेगी, और जो सेकंड और थर्ड आएंगे वो एलिमिनेटर खेलेंगे और जो टीम वहां पे जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। तो एमआई के पास अब मौका है अभी एक जीत हासिल कर ले, टॉप ऑफ द टेबल पहुंचने की उनकी कोशिश रहेगी, बट ऑब्वियसली जो नेट रन रेट है अगर आप कंपेयर करें दिल्ली कैपिटल्स और इनका तो काफ़ी फ़र्क है वहाँ पे। तो एक बड़ी जीत की खोज में होगी मुंबई इंडियंस की टीम, बट उनको ये भी मालूम है कि दिल्ली कैपिटल्स का और एक मुकाबला भी बाकी है जो कि गुजरात जायंट्स के सामने है। तो उनके पास भी है कि अगर वो मैच जीतते हैं तो ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल्स 12 अंकों पे पहुंच जाएगी और वो टॉप ऑफ द टेबल ही रहेगी। बट जस्ट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज के मैच के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग होने वाला है ये कॉन्टेस्ट, खासकर आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने जैसे कि पिछले मैच के वक्त भी डिस्कस करा था, जब उनका मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो 1 रन से ही हारे थे। और वो जो सीन्स थे अभी भी आई गेस हमें काफ़ी वो यादें ताज़ा है हमारे मन में। 48 घंटे पहले ही वो जो मैच हुई थी, तब ऋचा घोष वो 1 रन लेते वक्त रन आउट हुई और उसके बाद उनके आंखों में आंसू थे। श्रेयांका पाटिल ऑल्सो गॉट वेरी इमोशनल, और उसके बाद जब दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स आकर उनको कंसोल कर रहे थे, शेफाली वर्मा हो, जेमिमा रॉड्रिक्स हो, तो ये सीन्स देख के मज़ा तो आया एज फैंस, बट ऑब्वियसली इफ़ यू आर इन द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कैंप वो बिल्कुल भी एक अच्छी मेमोरी नहीं थी उनके लिए। दे वुड डेफिनेटली वांट टू इरेज इट एज सून एज पॉसिबल, और आज उनके पास मौका है, वो मेमोरी इरेज कर सकते हैं। आज अगर एक जीत रजिस्टर कर लेते हैं वो मुंबई इंडियंस के सामने तो काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, क्योंकि आई थिंक आज अगर जीतते हैं तो मोर और लेस इट इज़ क्वाइट क्लियर कि वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे और एलिमिनेटर खेलने का मौका मिलेगा। तो स्मृति मानधना की टीम यही चाहेगी कि ये आज अपना 100 से भी ज़्यादा प्रतिशत दे, जो भी कमियां रही थी उनकी डीसी के मैच में आज वो मिस्टेक्स रिपीट ना करे। जो भी बल्लेबाज सेट हुआ है वो कोशिश करे कि वो एंड तक लेकर जाए, मैच जीतवा ले, या जो भी गेंदबाज अच्छे रिदम में लग रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स लेने की कोशिश करे। तो आई थिंक मोर देन आरसीबी, सॉरी मोर देन एमआई, आई फील दिस मैच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर आरसीबी, क्योंकि एमआई दे आर इन अ सेफ पोजीशन, वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, बट आरसीबी के लिए आज मस्ट विन सिचुएशन है, आज उनको जीतना ही होगा। एंड आई थिंक फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव आई फील कि आज हमें फाइनली देखने मिलेगा हरमनप्रीत कौर वर्सेस स्मृति मानधना, क्योंकि राउंड 1 में जब ये दोनों टीमों के बीच मैच हुई थी तब हरमनप्रीत कौर निगल के कारण वो मैच का भाग नहीं थी, पर आज टॉस में हम ये दोनों इंडियन लेजेंड्स को आज आमने सामने देखेंगे और वो एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा आज इन दोनों के बीच। बिल्कुल, आपने पिछली बार वो एक कॉइन्ड टर्म यूज किया था हरमन धाना, वो आप जैसे कंपेयर करते हैं हम लोग रोहिराट जो कहते हैं हम मेंस क्रिकेट में, वैसा। सो बिल्कुल मुंबई इंडियंस दे हैव नथिंग टू लूज फॉर, दे विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, बिकॉज वो अश्योर्ड है उनको स्पॉट, और फिलहाल वो सेकंड है। तो अगर इफ दे विन बाय अ गुड मार्जिन देयर आर चांसेस दे गो टू द टॉप ऑफ द टेबल, बट इवन if not so, they are at least assured of a second or a third
So there's nothing to lose for per se from the Mumbai Indians perspective. But RCB, एक बार आप वो एक ट्रिकी सिचुएशन में आ जाते हो, then you try to cut your losses जैसा कहा जाता है. तो वो they only need to avoid a defeat by a big margin. Exactly, अगर कहा जाए they just have to ensure कि यूपी से बुरा रन रेट ना हो उनका. Pratik, what are your views on the importance of this game from an RCB perspective? Well, Isa, as far as this moment is concerned, about what happened last night, obviously the RCB campaign would have partied big time because the result went about in their favor itself. And talking about the previous game, I do not think that the situation in the dressing room would have deteriorated to a great extent because the loss was just by 1 run, and in the T20 format, such things keep happening. And also the fact that there were a lot of positive takebacks for the RCB to move forward with. So obviously there would have been a scar, but not a very deep scar, because now they know that they have an opportunity to make it to the top three, and eventually go further ahead in the tournament. So that would put them in a much more calmer perspective. And also, talking about the batting front, in the last couple of games, we've seen that multiple people have been stepping up for RCB, something we did not see in the first leg of the WPL. Because in Delhi, quite a few times the big names at the top have failed to deliver, and surprising performances lower down the order, like what Georgia Wareham pulled the other day, we have seen, even though that went out to a losing cause. But the RCB batting unit has shown its mettle, that they are capable of scoring runs even when the big names are not there. And I feel that this is one of the greatest signs, because this would give Smriti Mandhana the liberty to go on and play her natural game at the top of the innings with uh, the openers that play there. So this would be a very positive perspective for them. And about the bowling, once again, the last time around we saw someone like a Shriyanka Patil step in and take the wickets, which is again a new name who has come and taken so many wickets, because even her performance in the first half of the tournament was not as pleasing as we thought it would be. So I would say that things are coming together for RCB, and yes, there are still a few aspects on which they would love to improve. Things about maintaining good bowling lines in the power play, and even on the fielding end of it, they might have been good, but obviously here and there chances have gone down. And on such a big game day like today, they would want to make sure that things do not get haphazard. And now talking about from where Mumbai Indians are coming, obviously they're riding high on their confidence. The last time around, what Harmanpreet pulled off for them was just spectacular, and you do not come to see such innings very often. So once again, even for them, there have been a lot of positives of late, and again a couple of negatives have been there. Someone like an Amelia Kerr, who went on to exceed all expectations at the first half of the tournament, has been quite unsuccessful with the ball off late. And also at the middle order for them, consistent performances haven't been coming by. So both teams have a couple of things to sort out. And for Mumbai Indians, their aim would be to get a win here, so that they could move on to the knockout stage with a fresh mind. Because often, in such tournaments, when a team placed at the top goes into the knockouts with a loss, there's a lot running on in their mind, and they're quite skeptical about how things would pan out at the knockout stage. So I would rate this game, equally important for both. But at this point of time, RCB need to be blessed that their fate in this tournament lies in their very own hand. I like how you hesitated and then said the openers. So I would, यश आपको क्या लगता है कि जितना ओपनर्स चॉप एंड चेंज किया एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर आरसीबी ने, हमने देखा कि पहले सोफी डिवाइन ओपन कर रही थी, फिर फॉर अ फ्यू गेम्स वी सॉ सपीनेरी मेघना, पिछले मैच में सोफी मॉलिन्यू ने ओपन किया था स्मृति मंदाना से के साथ. तो क्या आपको लगता है दिस इश्यूज एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर डिफाइन वेयर आरसीबी आर एज अ टीम राइट नाउ इन द पॉइंट्स टेबल?
डेफिनेटली उन्होंने एक एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर एक स्टेबल कॉम्बिनेशन नहीं रखा। अगर स्टार्टिंग में हमने देखा कि सोफी डिवाइन को बैक किया, उसके बाद फिर मेघना आई, और उसके बाद फिर उनको 2-3 मैचेस नहीं चले तो फिर वापस चेंज हुआ। तो वो एक टॉप ऑफ द ऑर्डर में जो चॉप एंड चेंज होते रहता है तो वो पूरे बैटिंग लाइनअप पे इफेक्ट करता है कि एक खासकर एक कैप्टन को भी ये होता है कि टॉप ऑर्डर फिक्स नहीं है तो कभी कौन परफॉर्म करेगा कौन नहीं परफॉर्म करेगा, तो उन पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है फ्रॉम द बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर एक वो जो बोलते हैं ना क्लियर माइंडसेट जो रहता है बैटिंग यूनिट में जो होना चाहिए, जो सेटल्ड कॉम्बिनेशन अगर रहता है तो वो होता है। तो मेन चीज़ यही रहेगी कि जो आज ओपनिंग कॉम्बिनेशन उतार रहे हैं, अगर सोफी मॉलिनी ओपन कर रही है या फिर सोफी डिवाइन ओपन कर रही है, तो गोइंग फॉरवर्ड इनटू द अगर आज जीतते हैं और प्लेऑफ्स में उनको वही सेम कॉम्बिनेशन रखना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर साइड। और अगर मैं ये हाई वोल्टेज क्लैश को एक छोटे इसमें सम अप करूँ तो द टीम विच इज मोर हंग्रियर फॉर दोज 2 पॉइंट्स विल कम आउट ऑन टॉप। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। द टीम दैट इज hungrier for the 2 points will definitely come out on the top. So let's quickly move on to key players for the day. So the first key player is हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर इस सीजन में टॉप स्कोरर रही है फॉर द मुंबई इंडियंस। 235 रन्स बनाए हैं, बेस्ट 95 का रहा है। एवरेज उनका 78.33 है। तो इट स्पीक्स loads of how important she's been for the Mumbai Indians side. So, without adding much more, I'd like to open the questions to my guests. Julie, हरमनप्रीत कौर का कितना की रोल है आज के मैच में? नहीं, रोल तो बहुत की होगा। और जैसे कि आपने वो एवरेज भी हाईलाइट करा, अपवर्ड्स ऑफ 75 जो था, तो आई थिंक कर्टेसी ऑफ द प्रीवियस इनिंग्स जो 95 नॉट आउट जो हम हमारे स्क्रीन पे देखते हैं, तो उसके वजह से वो जो एवरेज है वो एकदम स्काई रॉकेट हो गया हरमनप्रीत कौर का। क्योंकि 7 मैचेस जो मुंबई इंडियंस ने खेले हैं उसमें से 2 मैचेस तो हरमनप्रीत कौर ने मिस करे हैं। तो 5 मैचेस में उन्होंने 235 रन्स बनाए, तो यही दिखा रहा है कि अच्छे फॉर्म में रही थी। और इंजरी के पहले 2 मैचेस उन्होंने खेले थे और उसके बाद जो 2 मैचेस स्किप हुए, तो आई थिंक काफ़ी डिफरेंस भी हमें लगा। बट जो पिछले मैच के अंदर उनका जो परफॉर्मेंस था, तभी लगा कि हरमनप्रीत कौर इज़ फाइनली बैक, शी इज़ अराइव्ड, इंजरी से रिकवर हो चुकी है ऐसे लग रहा है। और आज भी वैसे ही कुछ अहम रोल खेलेंगी वो, नंबर 4 पे जब आएंगी मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है मिडल ऑर्डर के अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि जो ओपनर्स है वो काफ़ी फायरी स्टार्ट देते हैं, बट उसके बाद वो जो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करना होता है वो अक्सर, इफ़ द मिडल ऑर्डर इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, तो वो स्कोर उतना रिफ्लेक्ट होता नहीं है। तो कहा हम इमेजिन करते 170 180 इजीली हो जाए, बट अगर मिडल ऑर्डर नहीं परफॉर्म करता तो शायद 150 तक ही रुक जाती है वो टीम की टोटल। तो आई थिंक हरमनप्रीत कौर का दोबारा रोल इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले कहा था, राउंड 1 मैच वो खेली नहीं थी, उन्होंने मिस करा था, तो ऑब्वियसली शी विल बी ईगर टू गो आउट देयर, प्ले अगेंस्ट हर वेरी ओन फ्रेंड स्मृति मंदाना एंड हर टीम। तो एक अलग अप्रोच से भी उतरेंगी, हमें काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स भी देखने मिलेंगे। और मेरे ख्याल से जो पिछले मैच में उनका जो परफॉर्मेंस था, आई थिंक बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्फिडेंस कैरी करा होगा। जो गुजरात जायंट्स के खिलाफ उन्होंने चेस करते हुए जो पारी खेली, वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। 190 आप चेस कर रहे हो और उसमें से 95 रन अगर एक बल्लेबाज बना रहा है, तो यही दिखा रहा है कि कितने अच्छे से उन्होंने वो चेस को ऑब्वियसली लीड फ्रॉम द फ्रंट करा। हालांकि एक लाइफलाइन उनको ज़रूर मिली थी 40 पे, बट वो एक अच्छी बल्लेबाज है और उन्होंने उसके ऊपर कैपिटलाइज भी करा। तो आज भी वैसे ही उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट आरसीबी का एक अच्छा बॉलिंग अटैक है, काफ़ी अच्छे अच्छे स्पिनर्स भी है। हमने जैसे कि पिछले मैच के अंदर भी देखा था, श्रेयंका पाटिल ने कमाल की गेंदबाजी करी थी। तो आई थिंक हरमनप्रीत कौर को अच्छे से वो स्पिनर्स के खिलाफ भी खेलना होगा। जॉर्जिया वेरम है, सोफी मोलिन्यू है, रेणुका सिंह ठाकुर जो एक पेस गेंदबाज है। तो आई थिंक बॉलिंग अटैक अच्छा है, बट हरमनप्रीत कौर को दोबारा वही कॉन्फिडेंस के साथ उतरना होगा, मेरिट ऑफ द बॉल शुरुआत में खेलना होगा, एंड ऑब्वियसली जब वो सेटल हो जाए तब वो एरियल शॉट्स आएंगे उनके बल्ले से। तो आज दोबारा उनका रोल इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने मेंशन किया, वो चांस मिला था हरमनप्रीत कौर को, बट अक्सर हम कहते हैं यू आर नॉट डिफाइंड बाय द चांसेस दैट यू गेट बट व्हाट यू मेक आउट ऑफ दोस चांसेस। तो शी मेड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द चांस दैट शी गॉट ऑफ फीबी लिटरीट। और हमने देखा कि उसके बाद देयर वाज नो relief for the Gujarat bowlers. She took about each and every one of them piece by piece. यश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हरमनप्रीत कौर का आज का रोल कितना क्रूशियल है?
एक क्रूशल रोल तो रहेगा, क्योंकि जो जिस प्रकार का इनिंग्स उन्होंने लास्ट मैच में खेला उनसे काफ़ी एक कॉन्फिडेंस मिला होगा उनको। और दूसरा कि हमने देखा कि लेटर ऑन इन द इनिंग्स जैसे उन्होंने स्पिनर्स को स्टेप आउट करके मार रहे थे कमिंग डाउन द ट्रैक, तो वो एक स्पिनर्स का बैटल इंटरेस्टिंग रहेगा कि सोफी मोलिन्यू, जॉर्जिया वेराम, श्रियंका पाटिल वैसे स्पिनर्स को वैसे वापस अटैक करते हैं या फिर क्रीज में रह के रोटेट करते हैं स्ट्राइक। और दूसरा तो ये कि उन्होंने जो उनके जो इनिंग्स आए हैं, तो हमने देखा कि एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर हेली मैथ्यूज जैसे प्लेयर है, हेली मैथ्यूज, नैट सिवरब्रंट, उनका जो फॉर्म है थोड़ा बहुत हॉट एंड कोल्ड रहा है। जो परफॉर्मेंस जो कंसिस्टेंसी जो उनसे एक्सपेक्ट की थी वो आ नहीं पाई है, लेकिन ओवरऑल बाद में हरमनप्रीत कौर के कंट्रीब्यूशंस ने वो थोड़ा बहुत टीम को इफेक्ट होने से बचाया है। बट अभी आज का मैच क्रूशल है उनके लिए, तो गेटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, सो आई वुड लाइक हर टू कंटिन्यू विद द सेम अप्रोच। बिल्कुल। हरमनप्रीत कौर की प्लेयर है, हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव ऑन टू अनदर की प्लेयर फ्रॉम द मुंबई इंडियंस, दैट इज Nat Siva-Brunt. Nat Siva-Brunt hasn't appeared to be her usual self, but she's paid more than crucial contributions to the side. We've seen her being the player of the matches on few occasions. तो इस सीजन उन्होंने 139 रन बनाए हैं, और हम कह रहे थे कि बॉलिंग इतनी अच्छी मतलब लाइन लेंथ के हिसाब से वो डाल रहे हैं, बट इतनी सफलता नहीं मिल रही उनके। बट शी इज पिक्ड अप 7 विकेट्स, शी स्कोर्ड 139 रन्स, and these are the basic things that you expect from your key all-rounder. Play some crucial knocks, pick up wickets when no one is able to get the breakthroughs for you. Pratik, I'd like to ask you, how crucial a role will Nat Siva-Brunt play today? Well, Yazad, so her role for every Mumbai Indians game has been crucial because she, makes up the important part of the Mumbai Indians unit, be it batting or bowling. You've always gotten her up in your ranks to perform. And although, her performance with the bat has not been great so far, it has been hot and cold. And, at certain times she has gotten off the starts, but have not been able to convert them. And up until now it really hasn't been that great of a problem because she's surrounded with such talented batters who have gone on to perform on multiple occasions. And we've also spoken about Mumbai Indians having these set of players, where each and every player stands out for a different game and wins them the game. So up until now they haven't faced any major problem, but as we go into the knockouts, it is all the more important for her to dig into the innings and make sure that the innings revolves around her, because in that middle order I do not think anyone possesses more experience than her, although they have gotten more runs than her in this tournament. So she should treat this match as a very important one, even though they have qualified. So it would be like a potential simulation game before going into that very important knockout stage. So she gets her basics right, and also her mindset as to what she wants to execute there in the knockout stage. So treat this as a practice game and play it judiciously so that you can take back some value from this and apply it at the knockout stages. And like we've discussed with the ball from the very first day, that her change of pace and accuracy of lines and length have been very good. Once again, she's like been scalping wickets with a lot of change in pace deliveries over the season. So I think it is important for her to continue the same. Again, on occasions, she's not gone on to complete those 4 overs because Mumbai are spoiled for so many choices. So again, like, make sure that you give put your best foot forward today, and just treat this as a practice game going into the knockout stage. So yeah, that's about it. जूली, मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगा नैट सिवा-ब्रंट के बारे में। बिल्कुल, आई थिंक मैं अग्री करती हूँ काफ़ी प्रतीक के साथ कि एक आई थिंक एक सिमुलेशन की तरह इसको ट्रीट करें, या प्रोबेबली आई वुड जस्ट से कि एक ग्रैंड रिहर्सल, जैसे कि जब हम स्कूल में होते थे तब स्पोर्ट्स डे एनुअल डे के पहले ग्रैंड रिहर्सल होती थी, तो वैसे कुछ ग्रैंड रिहर्सल की तरह इस मैच को ट्रीट करें, क्योंकि इसके बाद अगर मुंबई इफ दे एंड अप बीइंग सेकंड,
तो आई थिंक उनको एक एलिमिनेटर भी खेलना होगा, तो 2 मैचेस अज्यूमिंग कि शी हैज़ टू प्ले 2 मोर मैचेस आफ्टर दिस, तो एक अच्छा एक रिहर्सल या प्रैक्टिस हो जाए नैट सिमरन की, तो उनका अप्रोच वही होना चाहिए। हालाँकि ज़्यादा रन्स आए नहीं है, विकेट्स भी चटकाए नहीं है, पर जब राउंड 1 मैच हुआ था ये दोनों टीमों के बीच, तब उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे एंड शी हैड ओपन्ड द बॉलिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने तभी ओपन करी थी। तो आज मुझे भी लग रहा है कि आज दोबारा उनको मौका मिल सकता है, नए बॉल से हरमनप्रीत कौर शायद उनको यूज़ करे पावर प्ले के अंदर, और तभी अगर विकेट्स मिलते हैं उनको, तो उनका ऑब्वियसली वो विकेट कॉलम में आई थिंक बढ़ती ज़रूर होने वाली है। और रन्स के साथ अगर हम देखें तो भी वो मैच के अंदर उनके रन्स आए थे, अमीलिया कर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने स्टिच करी थी। एक लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट रहा था, 130 के आसपास का रन्स कुछ चेस करना था मुंबई इंडियंस को, पर एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने करी थी। आई थिंक वो यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर देती है। And if you are some other player in the Mumbai Indians team lineup, and if you know that you have a player of the caliber of Nat Silverbrand, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट एनएसबी हैज नॉट बीन इन द ग्रेटेस्ट ऑफ फॉर्म्स, if you are Yastika Bhatt or Hayley Matthews, you know that at number 3 we have somebody like Nat Silverbrand, तो हमारे पास लाइसेंस है कि हम अटैकिंग शॉट्स खेल सकते हैं। और वाइस वर्सा, जब भी बॉलर्स का अगर डिस्कशन कुछ होता होगा, if the bowlers are not able to get wickets, they know that they have somebody like an NSB इन द टीम। तो आई थिंक वो जो एक आई थिंक इस कैलिबर की प्लेयर जो एक कॉन्फिडेंस देती है बाकी प्लेयर्स को, ये मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज दोबारा मुझे लगता है एनएसबी को ये एक लॉन्च पैड की तरह ट्रीट करना होगा, इस मैच को उड़ान भरिए, और आने वाले 2 मैचेस में आई थिंक अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा उनसे। बिल्कुल, अक्सर हम उन्हें बिग मैच प्लेयर की तरह रेफर करते हैं, सो इट कैन नॉट गेट इट डज गेट बेटर बिगर देन दिस, बट ये यहाँ पर अ डायरेक्ट स्पॉट इन द फाइनल इज ऑन द लाइन, सो hopefully Nat Silverbrand gets her A game from the Mumbai Indians perspective. I'll move on to our next key player from the RCB perspective, that is Smriti Mandhana. बतौर कैप्टन ओपनर है, बैटर है, काफी काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है। पूरे टूर्नामेंट में अब तक हाईएस्ट रन स्कोरर है फॉर द आरसीबी टीम, 248 रन बनाए हैं, बेस्ट 80 का रहा है, एवरेज 35.42 रही है, एंड शी हैज बीन अ बैंकेबल प्लेयर फॉर आरसीबी दिस सीजन, कि जब भी जरूरत पड़ी है शी स्टेप्ड अप। हालांकि थोड़ा ऐसे बीच में व्हेन शी इज कम टू दिल्ली, वो एक दो क्रूशियल इनिंग्स में वो नहीं क्लिक हुई है, but I mean you can't be always scoring for your team, there are other players who play around you, but एक बहुत crucial player है from the RCB perspective। यश, आप क्या कहना चाहेंगे स्मृति मंदाना के बारे में, आज के रोल में उनका? आई थिंक एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर उनका रोल क्रूशल रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले मैच में सोफी मॉलिनी ओपन की थी, तो वो ओपनर कौन आते हैं वो अभी भी फिक्स नहीं कह सकते। तो वो एक पॉइंट से स्मृति मंडाना शुड टेक द इनिंग्स डीपर एंड देन सी वेयर शी कैन टेक हर साइड टू विच टोटल इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग, और अगर टारगेट चेस कर रहे हैं तो जैसे कि इनिशियली सेटल होने के बाद स्पिनर्स को थोड़ा स्ट्रगल किए, लेकिन तो रोटेट करते हुए इनिंग्स में सेटल होने के बाद वो अटैक कर सकते हैं, तो वो एक क्रूशल रोल रहेगा उनका। बिल्कुल। तो आई थिंक some of her poor innings have come with that, even keeping that in mind, that she's not had stability at the other end. There have been too many changes in her batting partners, and that may have affected her game at times. So Pratik, what are your views on how crucial a role will Smriti Mandhana play today? Well, according to me, the entire RCB batting lineup revolves around how Smriti Mandhana goes on to perform on that specific day, because on days she makes it past even the fourth over, you've gotten off to a brilliant start and with also a good run rate, and this automatically eases off the pressure, the non-striker as well. We've seen at times, where Smriti has gotten going and, beat Sophie Devine or even Sabineni Meghna, who've taken things slowly and then accelerated. So I think Smriti's role is again very crucial today, and it is important for her to get on with some runs, because we've seen it a couple of times this tournament. It's either she's fully in the game, she scores those big 50s, or it's her departing in the first couple of overs itself. So whenever she's gotten off to starts, they have been converted by her. So I think she does need to assess the conditions and go about playing.
The last time around when she was out LBW to the spinner, that ball was low on bounce and did not turn to her expectations. So if she had thought about it and played it straight before flicking it off her pads, such a such a dismissal would not have affected her. And about the fact that the openers by her end have been changing, so obviously it is extremely difficult for a player to cope up with that, because when you walk onto the field with the same batter day after day, so many things go on to synchronize with your partner, be it the running between the wickets, or just about what you communicate on the pitch about how the bowlers are bowling, and it's just about your sense of comfort out there in the middle. So she's lacked that in the season. But one thing about to point out about the change in openers is, whenever RCB have gone about making a change, the very first couple of innings, those new openers have bought in. They have gone on to score some big runs. We saw it with Sabineni Meghna as well, that when she was made to open in the first couple of games, she did get a couple of 50s and 30s. And even the last time around, Sophie Molyneux got off to a start, although could not convert it to a 50, but she did get off to a good start. So you know somewhere the RCB's think tank is turning out right in the initial phases, but it's just that the openers are not able to continue that good form. So it would be a challenge for them as to whom they would go with today, because they've been chopping and changing their team quite a bit. So it has also affected Smriti in a couple of ways. Let's quickly move on to our next key player, that is एलिस पेरी. एलिस पेरी बतौर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, नंबर 3 पर बैटिंग करती है आरसीबी के लिए. और शी इज हैड अ गुड टूर्नामेंट. शी स्कोर्ड 206 रन सो फार. She may, by the standards that she maintains, be a bit disappointed, and she's yet to pick up a wicket this season. So that is a bit surprising, considering she's handy with the ball. So जूली, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि where is she missing a trick from एलिस पेरी perspective? अगर हम एलिस पेरी का रिकॉर्ड भी देखें इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, पिछले कुछ महीनों से हम कहेंगे ज़्यादा उनका इस्तेमाल करा नहीं गया है एज अ बॉलर. आई फील तो आई थिंक शी इज़ मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर. हालांकि जब उन्होंने अपना करियर पहले स्टार्ट करा था, काफ़ी इक्वल थे उनके दोनों क्वालिटीज़, बैटिंग और बॉलिंग की. बट आई थिंक एज द प्लेयर हैज़ एज्ड, ज़्यादा ओल्ड है नहीं, 32-33 साल की है एलिस पेरी. पर तभी हम अक्सर देखते हैं कि जैसे जैसे प्लेयर सीनियर हो जाते हैं, ऑब्वियसली दे टेंड टू प्रायोरिटाइज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स इफ दे आर एन ऑलराउंडर. तो आई थिंक एलिस पेरी का यहाँ पे बैटिंग डिपार्टमेंट उन्होंने प्रायोरिटाइज करा है, और बॉलिंग पे ज़्यादा इतना आई थिंक वो प्रैक्टिस या फोकस नहीं होता होगा उनका. और इसीलिए मैचेस के अंदर भी हमने देखा है कि उनको 4-4 ओवर के स्पेल दिए नहीं है. WPL के अंदर भी हम देखें तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. But obviously, 0 wickets is usually not something that you associate with Perry. If you ask me what she is missing a trick, I'm not quite sure. इसका जवाब है मेरे पास. एलिस पेरी herself knows कि क्या मिसिंग है उनके इसमें. बट आई थिंक 4-4 ओवर के उनको स्पेल अगर मिलते तो ऑब्वियसली 24 बॉल है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है आपकी विकेट लेने की. और खासकर अगर आपको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी दे, 18 ओवर या 20वें ओवर में गेंदबाजी दे, तब ऑब्वियसली जब बल्लेबाज अटैक करने की कोशिश करता है तब कैच आउट होने के चांसेस है, तब विकेट्स उनको मिल सकते हैं. तो आज उनका इस्तेमाल कैसे करती है स्मृति मंधाना, वो देखना होगा. क्या उनको आज गेंदबाजी मिलती है कि नहीं, वो भी हमें पता नहीं है. बट दैट इज़ व्हाट आई फील अबाउट हर बॉलिंग. बट अगर आप उनकी बैटिंग भी देखें तो आई थिंक अच्छा किया है उन्होंने. नंबर 3 पे भी जब भी उनको मौका मिला है बल्लेबाजी करने के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करी है. क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आरसीबी को ओपनिंग पेयर के अंदर जो प्रॉब्लम्स रही है, जैसे कि यश और प्रतीक ने भी डिस्कस करा है कि स्मृति मंदाना हैज़ बीन द फर्स्ट विकेट टू गो और वन ऑफ आवर ओपनर्स हैज़ डिपार्टेड क्वाइट अर्ली. तो इसीलिए नंबर 3 बल्लेबाज काफ़ी जल्दी आ रहा है आरसीबी के लिए. और तभी जो प्रेशर हैंडल करा है एलिस पेरी ने, जब भी उनको नंबर 3 पे मौका मिला है, अक्सर उन्होंने 4 पे ही बल्लेबाजी करी है, पर जब भी वो जल्दी आई है उन्होंने प्रेशर अब्जॉर्ब करा है स्पंज की तरह. मुझे लगता है वो पूरा प्रेशर सोक करा है और अच्छी पारियां उन्होंने खेली है. पूरा जो उनका एक्सपीरियंस है वो अच्छे यूज़ में लिया है. शी इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन एंड पेस, हमने देखा है. शी कैन यूज़ हर क्रीज वेरी वेल, फुटवर्क भी अच्छा कर लेती है. तो वो काफ़ी कंफर्टेबल लगी है मुझे इस इंडियन कंडीशंस के अंदर. बैंगलोर हो या दिल्ली हो, दोनों कंडीशंस को काफ़ी अच्छे से उन्होंने अडेप्ट करा है, और यही उनकी क्वालिटी भी दिखाता है. और जब भी ये दोनों टीम आमने सामने भी आए थे राउंड 1 के अंदर, एमआई और आरसीबी,
तभी आई थिंक एलिस पेरी वाज द टॉप रन स्कोरर फॉर आरसीबी, जो 130-132 रन बनाए थे, उसमें से 44 रन एलिस पेरी के बल्ले से ही आए थे। तो एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक जो मुंबई इंडियंस का है, उनके सामने उन्होंने रन्स बनाए हैं, तो आज वो ज़रूर कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगी। और पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है कि उनके बल्ले से रन्स आए हैं, पार्टनरशिप्स उन्होंने करी है, तो आई थिंक शी विल बी अ वाइटल कॉग इन द आरसीबी लाइनअप, and I think she could be a match winner, and I think RCB will want Ellis Perry to perform to the best of her abilities today. यश, मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगा अभी एलिस पेरी के रोल पर आज के। सो फ्रॉम द बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कुछ मैचेस पहले ये भी आया था कि वो शायद 100% फिट नहीं है, तो शायद वो भी एक रीज़न, वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा बॉलिंग नहीं दी जा रही है। और बैटिंग में हमने देखा कि पिछले मैच में फर्स्ट विकेट जल्दी गिर गया था, तो उनको एक वापस रिबिल्डिंग फेज के लिए जाना पड़ा था, तो वो स्ट्राइक रोटेट करके फिर किया था उन्होंने, अच्छा इनिंग्स खेला था। लेकिन अगर उन्हें एक सॉलिड प्लेटफॉर्म मिलता है फ्रॉम द टॉप ऑर्डर और स्पेशली ओपनर्स, तो हमको एक उनका एक फ्लुएंट बेस्ट इनिंग्स आज देखने मिल सकता है। बट उसके लिए एक वो प्रेशर उन पे जितना कम रहे इनिंग्स को स्टेबलाइज करने का, तो वो फ्रॉम द आरसीबी पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए बेस्ट रहेगा। That concludes our key player section. I'll quickly like to head to our fantasy playing 11s of the day. Julie, why don't you get us started with the fantasy playing 11? कि तो आज आरसीबी मुंबई इंडियंस का मैच, और फैंटेसी पिक्स के अंदर दो विकेट कीपर्स है। मुंबई इंडियंस की यास्तिका भाटिया जो विकेट कीपर है और सलामी बल्लेबाज भी है, और अच्छे फॉर्म में रही है, अच्छी क्विक स्टार्ट्स देती है वो मुंबई इंडियंस को। हेली मैथ्यूज के साथ उनकी पार्टनरशिप्स काफ़ी देखने में मज़ा आया है अभी तक। और पिछले बार भी जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी, तब यास्तिका भाटिया ने मेरे ख्याल से 15 बॉल 30 रन ऐसे कुछ करे थे, 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी करी थी, तो एक अच्छी शुरुआत दी थी उन्होंने, और एक अच्छे फॉर्म में भी है। उसके बाद ऋचा घोष, हमने ऑब्वियसली देखा था पिछले मैच के अंदर उनका जो प्रदर्शन रहा था, मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन ज़रूर हो सकता था अगर वो 2 रन लेने में सक्सेसफुल होते तो, बट ऑल सेड एंड डन वो भी अच्छे फॉर्म में लग रही है। उनके भी बैट से अच्छे अच्छे शॉट्स आए हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ भी उतरेंगी वो मुंबई इंडियंस के सामने। तो ये दो विकेट कीपर्स है फैंटेसी पिक्स के अंदर। उसके बाद 2 बल्लेबाज रखे हैं, और ये दोनों बल्लेबाज अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के कप्तान भी है। हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की मिडल ऑर्डर बल्लेबाज और कप्तान, और स्मृति मानधना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तान और सलामी बल्लेबाज। और मेरे फैंटेसी पिक्स के अंदर मैंने उनको कैप्टन भी बनाया है। आई एम होपफुल कि शी हैव अ बिग डे टुडे विद द बैट, और काफ़ी रन्स भी आएंगे उनके बल्ले से। और हरमनप्रीत कौर ऑब्वियसली हमने जैसे कि बात करी है, पिछले मैच के अंदर 95 रनों की वो नाबाद पारी उनके बल्ले से आई थी, तो वो ऑब्वियसली चाहेंगी कि वो वहाँ से आई थिंक कंटिन्यू करे। शी वुड लाइक टू पिक अप फ्रॉम वेयर शी हैड लेफ्ट इन द प्रीवियस मैच, तो उनके ऊपर दारोमदार होगा मुंबई इंडियंस के मिडल ऑर्डर को संभालने का। और स्मृति मानधना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक अच्छी शुरुआत दे, और जो भी उनके साथ ओपनिंग करने आए आज, उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बना के मिडल ऑर्डर को एक अच्छा फाउंडेशन सेट करके दे। उसके बाद इस फैंटेसी पिक्स के अंदर 5 ऑलराउंडर्स मैंने रखे हैं, फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि ये दोनों टीमों के पास दे हैव ग्रेट ग्रेट ऑलराउंडर्स इन द साइड, स्टार ऑलराउंडर्स है इन दोनों टीमों में। तो एलिस पेरी, जिनकी हमने जस्ट अभी बात करी है, अच्छी बल्लेबाज है, और गेंदबाजी के साथ भी अगर 1-2 ओवर्स डालने हैं तो वो कर सकती है। उसके बाद हेली मैथ्यूज जो यास्तिका भाटिया के साथ ओपनिंग करने आएंगी मुंबई इंडियंस के लिए, तो वो भी अटैकिंग बैटिंग कर सकती है। हालांकि पिछले कुछ मैचेस में रन्स नहीं आए, बट यू कैन नेवर राइट हर ऑफ वंस शी गेट्स गोइंग। एक बड़ा स्कोर उनके बल्ले से आता ही है, हमने देखा है पिछले सीजन भी WPL के अंदर। उसके बाद नैट सिवर ब्रंट जो नंबर 3 पे आती है मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाजी की शुरुआत भी कर सकती है मिडल या डेथ ओवर्स में, किधर भी वो गेंदबाजी कर सकती है। तो ये 2 अच्छे ऑलराउंडर्स है मुंबई इंडियंस के पास, जो मेरे फैंटेसी पिक्स के अंदर भी शामिल है। उसके बाद और एक मुंबई इंडियंस की ऑलराउंडर है यहाँ पे, अमीलिया कर, जो मेरे फैंटेसी पिक्स की वाइस कैप्टन भी होंगी। उनके आई थिंक उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में विकेट लेस रही है अमीलिया कर, पर बल्ले से योगदान करती रही है। जो पिछला मैच हम डिस्कस कर रहे थे, हरमनप्रीत कौर ने जब 95 रन स्कोर करे थे, तभी उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व थे। हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं था, 12-15 रनों का ही था,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट तो भी वो उनके साथ खड़ी रही, तो वही दिखाता है कि अच्छे पार्टनरशिप्स में वो शामिल हो सकती है, स्ट्राइक रोटेट कर सकती है। और गेंदबाजी हमने ऑब्वियसली देखी है, उनकी अच्छी लेग स्पिनर है, पर पिछले कुछ मैचेस में विकेट्स नहीं चटका पाई है, बट आज उनका दिन हो सकता है। आज अगर उनको टर्न और ग्रिप मिले इस दिल्ली की स्लो एंड लो पिच में, तो आज ज़रूर इफेक्टिव हो सकती है। उनके बाद जॉर्जिया वैरहम है, जो आरसीबी की ऑलराउंडर है, वो भी एक लेग स्पिनर है और राइट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैटर है। एक दो मैचेस हमने पहले देखा था कि जॉर्जिया वैरहम ने वो एक अच्छी पारी खेली थी 48 रनों की, जिसके वजह से वो आरसीबी का जो डिफीट मार्जिन था वो कम हो चुका था। जीजी के खिलाफ जब मैच हुई थी, तो वही दिखाता है कि वो लोअर ऑर्डर में काफ़ी यूजफुल रन्स कंट्रीब्यूट कर सकती है, और जब भी गेंद से मौका मिलता है वो विकेट्स चटकाने की उनकी कोशिश रहती है। तो वो एक अटैकिंग बॉलर भी है, विकेट टेकिंग बॉलर है, और एक अच्छा एसेट है आरसीबी के लाइनअप के अंदर। और फाइनली दो बॉलर्स रखे हैं मैंने मेरे फैंटेसी पिक्स के अंदर। शबनम इस्माइल, जो मुंबई इंडियंस की तेज़ गेंदबाज है, नई गेंद से हमने देखा है काफ़ी तेज़ गति से वो गेंदबाजी करती है, बल्लेबाजों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता उनके खिलाफ रन्स स्कोर करने के लिए। विकेट चटकाने की एक अच्छी आदत पड़ गई है शबनम इस्माइल को पावर प्ले के अंदर, और अर्ली ब्रेक थ्रूज देके वो मुंबई इंडियंस को एक मोमेंटम बनाकर देती है बाकी गेंदबाजों के लिए भी। और उनके बाद सोफी मोलिन्यू को रखा है टीम के अंदर, जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है आरसीबी की, और पिछले मैच में जैसे कि हमने देखा था वो ओपन भी करने आई थी बैटिंग स्मृति मंधना के साथ। तो एक ऑलराउंडर ज़रूर हो सकती है, पर इस फैंटेसी पिक्स के अंदर बॉलर में मैंने उनको रखा है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एसेट है आरसीबी की टीम के लिए, और गिवन हर डे शी कैन बी अ मैच विनर। Pratik, why don't you get started with your playing 11? Yes, Yazad. So, starting off with the two wicket keepers, Richa Ghosh and Jastika Bhatia. We've come to see Richa live up to the expectations in the last couple of games. The kind of boost she's given RCB lower down the order, where the game is at stake, has been tremendous. And, they would continue to bank on her for her immaculate abilities. And as far as Istika Bhatia is concerned, over the season, she's had a couple of good performances at the top in the power play. She goes on to make good use of the field restriction and ease out the pressure out there at the top with Haley Matthews. So both of these wicket keepers have shown their mettle, and it is important for them to adhere to their responsibilities today as well. And then for the batters, starting off with Shruti Mandana, someone who is my captain as well today, although she is coming off a disappointing performance in the previous game. We know the kind of class and caliber she possesses, and over the tournament, she's given RCB not only starts, but she's also taken them into the innings, making sure that the batting goes on to perform smoothly. And also the way she uses her bowlers today in the field would be crucial, because we've spoken about her getting the permutations and combinations wrong a couple of times early on in the innings, and today being one of the most important games for them, in the scenario of qualification, it will be important to see as to how she will rotate her bowlers. And Harmanpreet Kaur, my vice captain, coming off a brilliant innings the last time around, and I think her approach needs to be the same as well, because last time around, where she stepped onto the field, she was chasing a humongous total, and she had to keep up with the run rate, where certain number of runs were required in that over, without which the hill they were climbing would have become more bigger and difficult. So there were a lot of calculated risks taken by her, which went on to pay dividends. So again, brilliant performer under pressure, and I think she needs to bat through the innings so that she goes on to the knockouts with quite some confidence. And again, like Julie mentioned, both teams do comprise of some world-class all-rounders. So starting off with Elise Perry, in the last couple of games, the way she's held together the RCB batting unit has been spectacular. She's gone about soaking all the pressure when the openers perish, and then rebuilding the innings from there to going on and stabilizing it at the back end. She would play a crucial role with the ball. She's not been utilized, that much as we would have expected it to be. But if given an opportunity
in the power play, she needs to make use of the new ball, or even if she comes lower down the innings to bowl, maybe making use of the change in paces and nailing the Yorkers should be something that she needs to focus on, because on multiple occasions she has been short and also has moved away from her target lines and lengths. So such things need to be kept in mind. And then moving on to Nat Cyber Brunt, we've spoken about her today as well, as to that she possesses much more capabilities than she's lived up to. So treat this as just a practice game, and give it your best shot before you move on to the knockouts. Then talking about Sophie Devine, firstly, her with the bat in the last couple of games, she has gotten those 25s or 30s, and even to reach till there, she's hit some humongous sixers. It's all about just capitalizing on those starts and going on to play bigger innings, because whatever small margins that RCB have lost in the second half of the tournament, if say a player like Sophie Devine had gone on to bat for a couple of more overs, it would have easily been RCB's game. So just extend your batting streak a little longer. And when it comes with the ball, she's been used quite effectively by Smriti Mandana. Wherever required, she's come in and pitched in a couple of overs. Someone again who's brilliant with the change of pace. And then speaking about Amelia Kerr, I feel her, bowling performances have just gone on to deteriorate into the second half of the tournament. Maybe a reason could be she's introduced into the bowling quite late as well. So, her mindset should be pretty clear to repeat whatever she's done in the first half, stick to her lines and lengths. She's a good turner of the ball and someone who's quick through the air as well. So I think it just needs to be kept simple, because RCB have plenty of batters who would go against her, and which would also give her the opportunity to go on and take the wickets. Georgia Wareham, someone who's been quite expensive with the ball in the last couple of games, so she would like to chop and change her lines and lengths, and pull it a little back, because as a leg spinner, when you get more fuller, you would give the batter all the like licenses to go after you, because the possibility of turning the ball reduces. So uh, changing the lines and lengths would help, and with the bat again, she would play a crucial role. And when RCB went on to spot her batting ability lower down the order, it would have given Smriti Mandana just that more extra license to go after the bowlers at the top, because she knows that she's gotten someone like Georgia Wareham at the bottom to back her up. And for the bowlers, Shabnim Ismail, she's impressed us all throughout the season with the ball, with how she's so energetic at the field. So she needs to continue the same. She would be up against Smriti in the power play, and I think that would be her biggest challenge and goal to achieve as well. Because if they go on to scalp Smriti early on, they would dent RCB's chances greatly. And to end it up with Saika Ishaq, I think from the Delhi phase of the tournament, she's picked quite a few wickets. She's hit the right lines and lengths, and even in the power play, she's been able to turn the ball and produce those timely wickets. So she would again be crucial in today's game for the Mumbai Indians, and that sums up my fantasy playing 11. Uh, Definitely. So that winds up our fantasy section for today. Now, I'd like to quickly discuss RCB's qualification scenario before we move forward. So RCB on paper have the highest chance of qualifying क्योंकि वो खुद की तकदीर खुद के हाथों में है basically उनकी. They have no dependency on the other two teams. So if RCB wins this game against Mumbai Indians, they are through. Otherwise, if they lose their मैच इट कम्स डाउन टू नेट रन रेट. तो उसका सिनेरियो ये है कि 65 रन्स की मार्जिन या 43 बॉल्स अप्रोक्सीमेटली, दिस आर नॉट एक्यूरेट फिगर्स बट ये मार्जिन है which would still keep them above the UP Warriors in the points table according to the net run rate. So I'd quickly like to ask you, Julie, कि considering that RCB have never won against Mumbai Indians, what are the chances of them qualifying?
ये सर जैसे कि आपने वो जो स्टैट्स अभी रीड आउट करे 65 रन्स एंड 43 बॉल्स वो वाला स्टैट आई थिंक अगर मैं आरसीबी टीम के अंदर हूँ तो आई वुड बी प्रीटी कंफर्टेबल। हालांकि मैंने एक भी मैच अगर मुंबई इंडियंस के सामने नहीं जीता है, पर ये आंकड़े मुझे काफ़ी तसल्ली देंगे कि इतनी बुरी तरीके से तो हम नहीं हारेंगे। इवन इफ वी हैव टू लूज दिस मैच आई डोंट थिंक दे लूज बाय सच अ बिग मार्जिन, बट आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक हियर। मुझे आई थिंक काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है ये आरसीबी की टीम। Right through this WPL 2024 we have been talking that they have some star-studded lineup और काफ़ी अच्छी टीम लगती है ये ऑन पेपर, बट आई थिंक ऑन फील्ड ये फॉर्म के अंदर वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है। पर आज उनके पास बहुत बड़ा मौका है। आज एक मस्ट विन सिचुएशन के अंदर दे सीम टू फाइंड देमसेल्स। हालांकि हारे तो भी चांस बनता है उनके लिए, पर मुझे लगता है कि आज आरसीबी आज एक मैच जीत सकती है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। Bilkul. I mean, the situation is such that it's a must win match. But yeah, the margins that are mentioned that find them in a comfortable spot, not exactly where they can take things for granted. But yeah. So Pratik, as an RCB fan, how positive are you about their chances of going through? Well, I would actually say quite positive because the last couple of games they haven't gone on to lose by a huge margin, and also the fact, like I mentioned, that multiple players are stepping up at the crunch situations, and this is what a team requires, in such a competitive tournament. So, speaking about RCB making it through, the very fact that they've lost by smaller margins amplifies their chances of qualifying, because even if they lose by a smaller margin today, it really won't hamper their chances. But speaking about it positively and from the dressing room perspective, definitely they would want to get all their corners covered today, because this would be your last dance before going on to the grand stage if you make it on. So just get your basics sorted, and even your playing 11, they've been chopping and changing for quite some time now. So I am surprised to see if there are any more changes today, although the team went on to lose by a very small margin. But things cannot be said, because whatever works best today, they would go ahead and do it. So I'm quite positive about them making it on to the knockouts. So the news from the center is that RCB won the toss and they have elected to chase, which is a very brave call considering the last few matches at Delhi. They remain unchanged. So with the stability point of view that we were talking is there. But the news of Mumbai team has not yet come through if there are any changes. So I'll ask Julie what you make of this decision. ये मुझे लग रहा है ये काफ़ी इमोशनल डिसीजन है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले चेस करा है, क्योंकि आई थिंक स्मृति मानधना नोज हरमनप्रीत कौर वेरी वेल। हरमनप्रीत कौर लव्स चेजिंग। तो ये हम अक्सर देखते हैं कि ये फ्रेंड्स के बीच होते रहता है कि अगर इसको ये चीज़ करना पसंद है तो मैं इसको ये ना करने दूँ। आई थिंक वैसे कुछ हुआ है वहाँ पे, बट आई थिंक ऑन द सीरियस नोट आई फील कि आरसीबी अगर पिछले 2 मैचेस अगर हम देखें तो दे केम वेरी क्लोज चेजिंग 181, they came very close chasing 199. So I think RCB are backing themselves to chase big totals जो MI put forward करे, and obviously दूसरी तरफ स्मृति मानधना को भी पता होगा कि MI has not been a good team defending totals. तो वो एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को काफ़ी एनालाइज करके ये टॉस स्मृति मानधना हैज़ बीन लकी आई थिंक राइट एट द स्टार्ट ऑफ दिस गेम कि उन्होंने टॉस जीता है और उनको जो चाहिए वो उनको करने मिला है। तो आई एम होपिंग कि आरसीबी से एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने मिले आज के मैच में। So the MI news has come through. There is a forced change. Yastika Bhatia has been ruled out of this fixture after picking up a niggle, and Priyanka Bala is making her debut in today's game. So that's about the team news. I'll quickly take your match predictions for today before we conclude today's episode. Pratik, who do you think is winning today? Well, on a genuine note, I really feel that RCB have gone through all the hurdles, and hopefully they have learned from it. We saw Delhi Capitals lose by a close margin one game, and just 48 hours after they went on to pull a spectacular one. And I just hope that RCB do the same. And from us fans' point of view,
I really hope that the game goes down to the wire again and is a nail-biting finish. जूली, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा आज? मुझे भी लग रहा है आरसीबी के पास आज अच्छा चांस है, ये मैच जीत सकते हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस चैंपियन टीम है, हमें पता है, पर आई थिंक ये आपने जो यजाद वो चेंज के बारे में बात करी है, फोर्स चेंज, आई थिंक ये बहुत बड़ा चेंज है। केवल एक चेंज है बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि इससे अभी ओपनिंग पेयर ही चेंज होने वाला है मुंबई इंडियंस का। आई थिंक जो मुंबई इंडियंस का सीक्रेट सॉस था, आई फील राइट थ्रू दिस WPL 2024, वो हल्का सा चेंज हो गया। तो आज एक्चुअली देखने में मजा आएगा। मुंबई इंडियंस, I think batting is going to be tested given the fact that they are going to bat first. तो I think आज का मैच देखने में मजा आएगा और मुझे लग रहा है आज आरसीबी will have the last laugh. यश, आपके क्या व्यूज है? क्या आप प्रतीक और जूली से सहमत है कि आरसीबी आज जीतने के चांसेस ज्यादा है? Chances तो है, considering I think they would go out all guns blazing, but I would still like to back Mumbai Indians considering the kind of match winners they have, Nat Brandt, and considering अभी वो यास्तिका भाटिया at the top of the order नहीं है, तो थोड़ा added responsibility रहेगा उनके ऊपर, तो that's why I would like to back Mumbai. सो ये था आज हमारा मैच प्रीव्यू। अब क्विकली मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द फैंटेसी टीम्स दैट वी हैव मेंशन्ड ऑन आवर चैनल। सो उसमें कंसिडरिंग दैट देयर इज अ फोर्स चेंज इन द प्लेइंग 11 that Yastika Bhatia is ruled out, the small league team changes. We had picked up Yastika Bhatia initially, but we will have to drop her, and you could add in an additional batter from either of the sides, considering whatever suits your balance better. मैं एक few suggestions देना चाहूंगा यहाँ पर जो आप बैटर्स पिक कर सकते हैं उसमें से, या आप चाहे तो बॉलर्स भी पिक कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट कंसिडरिंग दैट अ बैटर हैज बीन out of the team, we would like to suggest a batter. So या आप अमनजोत कौर को पिक कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा इनिंग्स खेला था उन्होंने 44 रन के आसपास का। या सजीवन सजना को भी पिक कर सकते हैं, बिग हिटर है, हमने देखा है पिछले मैचेस में भी उन्हें। और आप अगर चाहे तो बॉलिंग में आप श्रेयंका पाटिल को ले सकते हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे, तो वो भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है आपके टीम में। तो ये था हमारा स्मॉल लीग का टीम। अब ग्रैंड लीग की टीम में ये चेंज कर सकते हैं कि यास्तिका भाटिया को हटा के आप एक एडिशनल बॉलर खिला लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल एक बॉलर लिया है। सो आप या शबनीम इस्माइल को ले सकते हैं, सोफी मॉलिन्यू चाहे तो आप ले सकते हैं, रेणुका सिंह ठाकुर भी अच्छी चॉइस हो सकती है, और पूजा वस्त्रकर भी बेहतरीन चॉइस है। तो ये हमारा था आज का मैच प्रीव्यू और फैंटेसी पिक्स। कल फिर जुड़िएगा एक और एपिसोड ऑफ फीमेल क्रिकेट लाइव में। थैंक यू। अगर आपको चाहिए एक डिटेल्ड वीडियो ऑफ फैंटेसी प्रेडिक्शंस, तो उसका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।